Hi sir, how are you sir? एक आवाज आ रही है? सेकंड एक सेकंड सर, मैं वॉइस पूरी कर देता हूँ। यस सर ना, बैकग्राउंड ये म्यूजिक बहुत फास्ट है। आज आज बहुत तेज चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक क्योंकि हम बहुत पहले से लाइव है आज। ठीक है, आज मतलब टुडे वी आर लाइक लाइव फ्रॉम last I think what 15 minutes. Okay, so hi sir, how are you? आई एम फाइन सर, फाइन फाइन। आज मैं भी नहीं किया, आज एकदम ऐसे बिना कॉलर वाली टी शर्ट पहन के आ गया हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम अटेंडिंग फ्रॉम माय होम। आज सब संडे तो ऑफिस सब बंद है। ठीक है, सो एंड चलो सर, ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। सो सर, आज का व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड टुडे? एक तो फर्स्ट स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। पहले रेंज बताएंगे, रेंज क्या होता है, फिर इनपुट स्टेटमेंट, एंड उसके बाद हम लूप्स और इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, लूप के अंदर भी ब्रेक, कंटिन्यू एंड एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद फंक्शन प्रोग्रामिंग बताएंगे थोड़ी सी, और फिर पे पाई से आपको डाउनलोड कैसे करना है। और मैं चीज़ दिखाऊंगा, ये थोड़ा बच्चों को सेट करने के लिए। दिस इज दी ये आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, दिस IoT डिवाइस। इसके एक बार आउटपुट लगा दिखाएंगे, मेरे कमरे का टेम्परेचर कितना है। ओके ओके तो ओके। ठीक है ना, ये मैंने सो बनाया था। वाओ, तो यही है, लाइक सी दिस इज व्हाट मोहित सर इज एंड और ये रास्पबेरी पाई, इसमें भी पाई जेंगो का प्रोजेक्ट चलता है मेरा। wow, wow, good, sir. Good, good. Nice. So, guys, I mean, actually, we have got what? I have referred one friend of mine. Got the coins, even when I enrolled, I not got 25 LU coins. Okay. Hi, guys. How are you all? So, this is Sai Kiran, and we have also got Mohit sir here. And we will start our Python 0 to Hero day 2 in a while. Okay, this session is gonna be end after today's night. Fine. So, and your exams will happen maybe tomorrow or day after tomorrow, something like that. So, you will receive an email by tomorrow. But for doing it, you all need to be just do one thing, that is register for this program. In the pinned chat, you can see very clearly that for getting the certificate, you need to register for this program. And the second thing you need to do, that is get your attendance, like mark your attendance. These are the only two things which you need to do to get eligible for the certificate. Okay, I hope that I am very clear with this. So please tell me in the chat if it is all okay for you. Let me. Good evening. I too didn't receive LU coins. Guys, for receiving LU coins, you need to do something like this. Okay, so yeah, just let me go ahead and show you what you need to do for getting LU coins. Just give me 1 minute. So, can you see my screen, by the way? Share screen window. Can you guys see our screen? I mean, like, I've just shared a screen right away. So can you guys see this? Okay, in this you have to go to Let's Upgrade sign in, and once you click on sign in, okay. So when you go to, I'm just clicking on my email ID using which I can sign in, and in whenever I refer my friend, okay, for example, referend earn is there, right? I click on this invitation. My invitation is copied. If I paste it in the YouTube description like this, okay, so anyone who is registering in this program using this link, I will start receiving LU coins. Okay, so you need to go to this reward section. In the reward section, you will find a scratch card like this, and you just need to scratch it out. Okay, so it is having a little bit of a bug here and there. When you scratch, it will act a little bit different, but yeah, you just go ahead and scratch this. You will see a confetti loading in, and you will get your reward, that is LU coin. So you will see 5 LU coins getting added up here if it was fully working then. Okay, but right now also I can say one thing, that each one of you can go ahead to refer and earn. Copy your link. Okay, copy your link, and after copying the link, send it to your friends. After sending it to the friends, if they uh,
Sir, I referred to my friend. He registered, but I got only 40 LU coins. Okay, so LU let's do coins. one thing. Okay, 40 into 3 is 120, right? So I'll ask the program team to reduce the certification amount. So the certification amount can be reduced to 120 or like 120 LU coins. So what do you think? Is it okay? Is this thing okay? Fine. Yes or a no would be actually appreciated, because we want to know what is your whole thought process. So, what do you think? Okay, sir, my friend is not registered yet. Okay, your friend is not registered yet, so you need to get them registered. And that's the way. So you get up to maximum 70 LU coins. So the mandate is not of 70 coins. It's not compulsory that everyone will get 70 LU coins, but the mandate is like getting random number, okay, in the redemption. But what we will do, we will just go ahead and drop the certification claiming value. So I'll talk to the program team, and I'll talk to them, and uh, I'll discuss. Okay, 10 per cruise. Is there any time limit to get certification? See, the certification time limit is very simple. It's 15 days from now. In 15 days, you need to just go ahead, get your certification done. So that's the whole part. Okay. So by the way, now the time is already 7:35. So let's go ahead and start our whole session. And I will be not there across the session. Okay, throughout the session I'll not sit. But Mohit sir is self-contained guy, so he will manage. So I'll be there till your attendance part, registration part, and our PGP part has been discussed, and then you can take it from there. I already okay. So let's move on from the LUcoin topic. So let's go ahead and start our today's day two. All the students who are actually live today. So we just want to say one thing. Great, nice. Please hit that like button, because other people also need to know about this kind of program is happening. So just go ahead and press that like button and all. And I'll answer all your questions in the chat. Let me now hand over the session to Mohit sir. By the way, if attendance link is working fine, please check. Check everyone if attendance link is working fine. So tell me in the chat if attendance link is working fine, yes or a no. And in the meantime, let me just go ahead. You all will receive an email about LU coins being okay, LU coins being reduced and all. So you will receive a complete communication about it. Okay, so that's it. Chalo, let's go ahead. By the way, Mohit sir, I would like to take. I will never break your whole session flow. So I just want to make sure that I pitch the PGP program which we have got, so that Hmm. students know about it. Just give me 2 more minutes. I'll be done with that, and then you can go ahead and take this session. Okay, so if you go to letsupgrade.in/programs, right, every one of you, if you guys go to letsupgrade.in/program, you will see here our paid programs which are top 3 here. So we have got these black colored programs are 100% job guarantee programs. Okay, if you click our data science full stack data science program, it's a PGP program, postgraduate program. All the first year students, or like second year students, third year, fourth year students, first year, second year, why you should join this program? If you want to get into a paid internship, or if you want to win tons of hackathons, then only you should join this program. It's a 6 months long program. In this 6 months long program, you will be learning live by a expert developer like Mohit sir and others coming in and teaching you. So even Mohit sir is one of our trainers for our PGP data science program. He takes care about whole Python part there. And it's a 7 to 10 hours weekly program. You will get one-on-one mentoring. 25 mentoring sessions will be there for you, and it's a 100% live program taught by complete developers. You will learn all these kind of tools which are related to Python and data science. Python, Keras, NLTK, Scikit-learn, then PyTorch, TensorFlow. Okay, so this is the whole curriculum. If you are a student and interested in data science, then this is the program for you.
PGP full stack program in data science. This is a certification where you will get NSDC ITM group of institutions and Skill India. So these three are the partners providing this certificate. You will have a certification number here. And as I mentioned, so these are the faculties whom we have got here. So see, here is Mohit Raj sir. And what all kind of projects, until unless you don't build projects, you will not be a good developer. So as Mohit sir also mentioned yesterday, आप लोगों को project इतने बनाने हैं कि developer का confidence इतना कूट कूट के भरे. So for that reason, you need to make sure tons of projects at Let's Upgrade, and we make it a mandate for everyone. So you all need to develop projects. That's the whole part. And here accelerate. So what all things you will get? You will get 100% job placement guarantee, all live learning, one-on-one weekly mentorship session, most affordable program because it just cost 1/10 of uh, cost as compared to the major competitors providing post PGP programs in the market, that too with job guarantee. And our students have got placed in these kind of companies: Google, Grow, Infosys, Pristine, okay, Deloitte, Oppo. So we have placed candidates in these many places, and we can place certainly you also. So just go ahead and make sure that you are registering for these programs. How to register? Click on enroll now. Okay, you will be asked for an application. Select the cohort date, submit, and the program fees is 36,600. Register for this. Okay, the discounts will be offered to you. If you have LU coins, redeem. I don't have any LU coins, but if you have a coupon code, will be provided later on by our developer advocates and all, if you are eligible for that. Okay, so no cost EMI you can take. You can actually get started. Say you can pay 2,500 as the down payment. Even if you want to pay less than that, you can do it certainly by even paying 1,000 for 1,400 rupees per month. You can pay 1,400 rupees per month and still be learning this whole part. So just go ahead, register yourself, and we will take it from there. Okay, so that's it. Nothing. You can click on this WhatsApp button also for more information, and you will be redirected towards our chat support and all, and you can take it from there. Okay, so thanks a lot for actually being patient enough in terms of when I was pitching. We not only have a program in what do we say, data science, but also in full stack MERN stack, that is full stack development. Let me just go ahead and show you that last piece, then I'm done with it. Just give me 1 minute. Okay, full stack web development, it is also the similar kind of program where you will go from literally zero to hero. You will learn data structure algorithm from there to Node.js, Express, MongoDB, and React. You will learn all these components in this. So that's the part, right? So just go ahead and register it to this program. We will meet you there. And the one more program which we have got, which is a boot camp, that is advanced Java bootcamp. All the students who are interested for Java, you can actually take this. This is a 2-month program, 2-month long, 1.5 to 2 month long program. It's just of 50 hours and 4 projects, and the fees of this program is 7,500. If you are interested in this program, then I will give you a coupon code. The coupon code is I love Java. If you want to go here, you can actually even apply here. I love Java. So you will get 2,500 rupees off for this program. Okay, so that's it, guys. Thanks a lot, and we will take it from here. Okay, so Mohit sir, up to you. So let's just go ahead. You share your screen, and we will start our whole learning. Okay. Hello everyone. Good evening. Namaste. Adab. Sat Sri Akal. So let's start today's session. So I'm sharing my screen. So if I look this side, means I'm watching your comments. Okay, and this side, this is my laptop, and this third screen just for extra my live video. Okay, so I'm sharing my screen here. Share screen. Screen number 1. Okay, now I hope you can see this Jupyter notebook. Yes, sir. We can see your Jupyter. Okay. So yesterday we saw different type of data structure. Okay, last data structure. Now I'm going to discuss, that is a dictionary. Okay, dictionary. So yesterday we saw tuple, string, and list. So now dictionary.
So what is yesterday, dictionary? yesterday you gave us a problem statement in tuple, which need to be so. हम लोग इतने suspense में हैं, समझ नहीं आ रहा उसमें. अच्छा. Tuple not sort, and I think there are two variables. I mean, in the function we need to pass two different Mm-hmm. variables. I think something like that we need to do. So you please tell us what is the answer to that. Okay, just let me know where is that problem. Okay, कोई नहीं. I'm just writing here. Okay, so list one. Okay. D and यहाँ पे is 2. Yep, yep. D, let's say anything 5 or 6 or something. Okay, got it. Okay, now I'm trying to sort. Okay, let's sort it. List one dot sort and print sort. So if I sort it, so I'm getting the result. Okay, that's okay. But I'm getting the result means the tuples, these internal tuples are sorted according to first element, because comparison happened with the first element. First A compared with B, B compared with C, ऐसे करके. Okay, but question is if you want to sort it based upon the second value, third value, fourth value, कुछ भी हो सकता है, anything. Okay, so उसे केस में क्या करना है? List one dot sort, it contain a key. Key means criteria of sorting. क्या criteria रखना है? So what criteria? Okay, criteria of sorting. So first of all, इसको मैं I'm doing on the editor. Okay, any simple editor, because in the Jupyter it can create a problem, small problem. Okay. Okay. Okay, simple. Now, Answer. so define a function, any function. I will tell you what is the meaning of this one. What is this? Okay, I will tell you, don't worry. So now list one dot sort and key is criteria. Criteria means which criteria you want to take. So first element, second element. So I am giving the criteria fun1. Fun1 is my criteria, and fun1 is taking x. What is x here? X is each element of the list. First element, then second element, and it is returning one. Second element. It is returning the second element. It means that criteria of sorting is second element. Done. Okay. So can you guys actually understand this whole thing, what sir has just done? By the way, okay, if you're getting difficulty, I'm just printing x. What is print? Because maybe the students say what is the meaning of x. Okay. So x is each element. Yep. So by the way, every one of you, it was yesterday's one question which sir gave us as a homework and to test our knowledge. So it is the solution to that. Okay. So for the people who are joining today itself, it is fine if you don't understand it. It's okay. But the whole point right now is it was just a small assignment, okay, which sir gave us yesterday, and it was all out of curiosity, nothing else. Okay, so I think this solves the whole problem. By the way, someone is actually saying that stop the music and all, but as per our yesterday Feedback. stuff, yesterday feedback, it's better to have the music. So what do you think? You want the music, yes or no? What is it? So if you want us to cut it down, we may do it, but वो बहुत empty लगेगा फिर, ठीक है? So yes sir, let's go ahead. Okay, so you can do this thing just in one line also. एक line में भी किया जा सकता है. This can be done one in line if you want. Okay, sir, can I do this? Should I do? Or Yes sir. Skip. Okay. Okay, if you want to do this thing in the one line, just let's see. One dot py. How to do that? Remove this thing. No need. And write here lambda.
Python, one line code. Okay. So this is a little bit advanced. Okay, one line code you will learn in Let's Upgrade. Okay, so now let's start our course. So today we are going to learn first how to take the user input. Can you tell me how to take the user input? Yes, anyone? Screen is not visible. Screen is properly visible. I can see Screen is different totally visible, guys. You just need visible. to go ahead and increase the quality of this part. By the way, I have just raised a poll to ask you guys about the music. So just go ahead and let us know if it is fine for you all. Okay, so now how to take the user input. So if you want to take the user input, use the input method. Yes, in the C language we can say is a scanf type का, ठीक है? But in Python this is the input, and it has a very good facility. You can give the prompt message like enter the value. Okay, and the value whatever you give will be stored in the A. And what is the property of A? A is always a string. Means this input value is always a string. So if you want to check the type, so you can see the prompt, enter the value. So if I give hello, so I'm getting the string. Okay, let's run it again. If you give value 100, I'm still getting the string. So इसको याद कर लो अच्छे से. So input method always take the input as a string. Whatever you give, if you give integer, float, whatever, it always take it as a string. ठीक है? So if you want to convert कि हाँ नहीं हमें तो 100 का int ही चाहिए. So if you want to convert, because if you think कि नहीं हमें int ही चाहिए, we need int only. So you can place a proper converter. Convert means you can say it's a function to convert. So if you want to convert any value, any string to integer, अब ये नहीं कि कोई भी, any string to integer, but which is convertible. ठीक है? Let's suppose if I give 100, so I'm getting the integer version of this 100. I can say, okay. And if I give hello, यहाँ पे error है. This is error actually. This cannot be convertible. Hello कैसे convert होगा? How? ठीक है? So 100 can be converted, but not the hello. Okay. Okay. I hope no any doubt. Integer I or don't think so. It is. I don't think any doubts are there still now. Yep, you can go ahead, Zaki. You can start. Okay. So अभी के लिए just int या float. If you want to convert into float, you can use float. Okay. चलिए. And next is range. So next topic is range. So मैं लिख देता हूँ. Let me just give 1 second. So next topic is range, because in order to understand okay, next topic, let's take next topic is if and else statement. I will cover range after that. If and else. Okay, if and else. So what is the meaning of if and else statement? In the daily life we use this kind of statement. Daily life. I'm not talking about the programming, I'm talking about the real life. Real life में जैसे कि consider अगर मेरा friend आया तो I will go to the movie. ठीक है, नहीं आया तो घर पे. Okay, I hope now getting the sense कि if my friend is coming, I go with shopping. I go for shopping along with my friend. Okay, so if and a statement daily life में भी use होती हैं, but we can also use this thing in our programming language. कैसे use करना है? Okay, very simple. देखिए, now I'm going to create a program for asking the password. एक password बना program. If okay, first of all let's take a password by using the input method. Enter the password. Okay, so यहाँ से password ले लो, and you know password is this pass1 is a variable which will take the input from the user in the string form. Okay, now if statement. What is the syntax of if? Syntax. So first of all let's see the syntax. So आपको क्या लिखना है? If your statement done and then this colon, and after colon
give the some spaces and the statement 1 and the statement 2 with some space. Okay, I will tell you what's the meaning of this space. If pass1 equal to, so now suppose I'm writing the password, let's simple password रखते हैं. Okay, so this is a password. Now colon, then space. What's the meaning of this space? Indentation कहते हैं इसे. We call it indentation. So what is the meaning of this space? Anybody tell me in the chat box. Screen is visible completely. Yes. It's not visible, sir, because it is. It's completely visible. I can see in the second laptop. It's completely visible. So you are talking in terms of the streaming, like what, this video and all. People are saying in the chat box, no, string is not visible. Everyone, please do one thing. Streaming quality is 1080p from our side. Okay, all you need to do is click on that gear icon in your video and check it out. Okay, so let me just take a pause for a while and ask you all guys, like, if your screen is visible. Screen दिख रहा है क्या यार प्रॉपर तरीके से? एक काम करो, एक हमारे लोगों ने वीडियो बनाया, वो भी देख लो. ठीक है, we were supposed to play this at the very starting of the session, but we just forgot. I just forgot about it. So let me add. I was thinking. अभी भी प्रॉब्लम है क्या स्क्रीन का यार? अभी तो चेक कर लो. I can see completely clear in second laptop. वो दूसरे नेट पे है और मैं सब बिल्कुल देख रहा हूँ अपने आप को. Okay, by the way, how is that video यार? वो वीडियो अच्छा है ना सर? वीडियो अच्छा लगा. अभी से अपना ये इंट्रो वीडियो है. Okay, so till next update, whenever it comes. So Luis, you continue. I think screen problem is done. Okay. So in the C language, अगर आपने C पढ़ा हो, in the C language we use curly braces. Okay, in Python there is no concept of curly braces. ऐसे curly braces होते हैं and then we write this statement. But in the Python there is no concept of curly braces. Okay, in order to make a block in Python, block बनाना. If in order to make a block, we use indentation. Means we can give a space. Just space दीजिए. If you can give a tab, you can give a 1 space, 2 space, 3 space according to your श्रद्धा जो भी है. ठीक है, according to your will. ठीक है, according to your convention. तुम्हें जो लगे वो दे दो तुम ऐसा. Seriously. Got it, sir. Okay, and after that I'm writing a statement. Done. Okay, now let's do some experiment on this one. Enter the password. So password, let's say Dell. I'm getting the message done only because this done is outside the block. ठीक है, ये outside में. So now let's run it again. If I give I'm getting both the statement. Okay, because if statement true, if this is true, then execute the internal statements. जो भी welcome to let's लिखा, run this one, and then after the completion of this if statement, run the print done message. Okay, so question is here, sir, is it compulsory giving space after the colon? हाँ जी, at least one space is necessary. If you are putting a colon here, means if statement, else statement, for loop, we have to put a colon.
ओके, ऐसा नहीं कॉलन कहीं भी लगा दो, कॉलन we have to show, because if this statement is true, what to do? At least one statement must be present to fulfill the criteria of identification. ठीक है, आई होप। अगर मैं दोनों को लेता हूँ, कंसीडर इफ आई पुट बोथ, सॉरी, ठीक है, दोनों। नाउ रन इट, enter the password, now password is del, so you can say I'm not getting anything. Now if I run it again and if I use let's, I'm getting the both the message, because both the statement now come under the if statement। ठीक है, अब आपको बताता हूँ इशू क्या है। देखिए, whenever you give the identification, whenever you're going to start a project, whenever you're going to start a program, first of all, take a convention. You can give spaces, you can give tab. It's totally dependent upon, you can give tab and spaces in one program, but this is not a recommendable thing. Use only one, either spaces or tab, throughout the project. If you use, although you can use both, but if you use both, then that will give you a serious headache, बहुत discipline खानी पड़ेगी आपको, seriously कह रहा हूँ, that's my personal experience. So before, so whenever you're going to start a project, take a convention. We will use 3 space, we will use 4 space, we will use tab, whatever, but choose one and be consistent with that. या तो tab लीजिए, space लीजिए throughout the program, ठीक है। Sai Divya, the colon is only the space, no, after the colon if we enter then the space will be automatically right. हाँ, it depend upon the editor, editor कई बार space लगा देते हैं, otherwise sometime no, okay, okay। So next thing, else statement, else statement, else means if this block, if this statement is not true, if this is true then execute this thing, if this is not true, it means this is false, then what to do in that case, what action should I take? So print password is wrong, done। Okay, if I give del koi password like intel, you can say password is wrong, password is wrong, okay, enter the password. Now if I use let's, welcome to let's, done। Okay, so this is the if and else statement. Suraj Singh saying, sir, how will you know where to put colon? Here, where you have a block, block कहाँ पे बनता है? If else statement में for loop, while loop, in these cases we need to create a block. कि ये this certain statement execute only if this statement is true, only if for loop, only if while loop. So in that cases we use a colon. Simple सी बात है. If you have ever learned the C language, तो आप ऐसे करते थे ना उसके अंदर ऐसे if else statement लिखते थे if। So here in Python there is no concept of this curly braces, just give the indentation ये है इसके अंदर, ठीक है। So next is multiple statement, multiple if statement. So I'm going to create a new program, multiple if statement, new notebook, okay, multiple if। So multiple if statement कैसे? Consider I want to put a grade, देखिए बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। Okay, I want to put a grade, I want to create a grade from a number। Consider मेरे marks हैं, स्कोर marks लेता हूँ, marks equal to input, enter the marks। I want to create a grade, कैसे करना है? ठीक है, इसको int में ले लो या फिर float में ले सकते हैं, int में भी ले सकते हैं, float, okay, okay। So now I'm going to use if and else statement. If marks greater than or equal to 90, in that case grade will be A। elif means अगर ये पहले वाला सही नहीं है, means first statement is not true, then what to do? Marks, check marks is greater than or equal to 80, in that case I can say grade .
70 grade C L if marks greater than 70 60 grade D. Done. Else कुछ भी नहीं आया. In that case grade equal to E. Okay, so if L if L if L if then else. So these are the okay. Remember only one statement only one statement will be executed. अगर तो पहला ही सही हो गया, if first is right then interpreter never check the rest of these. ठीक है. If first one is wrong means first one is false, then interpreter will check the second one. If second one false, then interpreter check the third. If third is right means third is true, then interpreter never check the rest of these elif statement. Okay, and in the end I can say print f string जो कल नहीं आया थे, please check what is the meaning of f string. Okay, f student got the marks and grade. ठीक है. So let's run it. So enter the marks, consider 90 marks. Just grade is not defined. Okay, so spelling mistake हो गया. Spelling mistake. Okay, sorry, spelling mistake हो गया यहाँ पे. Sometime grade. Actually in other notepad ना it automatically pop up कि हाँ ये पहले था. ये इसको मैं लिखता हूँ grade. ठीक है, चलो. So 90. So student got 90 marks and 90 and A grade. ठीक है, ये इसके अंदर. ठीक है. Now if I use 56, if I give the 56 value, now tell me the answer. If I give the 56, what would be the answer? Yes, 56 में क्या बनेगा? Yes, anyone? Yes, Giriraj, ask your doubt. So if I give 56, what would be the grade here? Yes, E. Yes, right. Okay, E. So this is very helpful statement. If elif, you can do a lot of things. ठीक है, बहुत जगह यूज होता है इसका. Don't think कि सिर्फ एक जगह दो जगह, but there are a lot of use of this elif structure. And in Python there is no switch statement. If you have ever learned C language, you know the switch statement. C नहीं होती, elif ही होता है. Okay, so I hope you get the sense. Yes, any doubt, anyone? चलिए, next thing. Now it's time to learn the loop. So before learning the loop, so let's study the one function. So yesterday we saw input. Yesterday we saw input method. Yesterday we int method. Yesterday भी हमने देखा था dir method. So now range. So I want to know what is the meaning of range. अगर आपको किसी को पता हो, please tell me range. Kapil Agarwal say, please tell the list comprehension. List comprehension is a little bit advanced topic, dear. I have done a lot of list comprehension. Mostly I write the list comprehension in my code. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगा 2 hours में तो people will get confused. Okay. Okay, range नहीं लिमिट नहीं है ये range. No. We use range function to produce the series number बनाने के लिए. अब देखिए कैसे. ठीक है, this is the most very important thing. Okay, range. If I give range 20, I'm getting just expression 0 to 20. What is the meaning of this 0 to 20? It means it can produce a number 0 to 20. अभी यहाँ पे number नहीं आ रहा कुछ भी. Okay, but you can fetch the value, you can get the value, you can obtain the value if you use list, tuple या फिर for loop.
ओके, यू कैन यूज फॉर लूप, यू कैन यूज लिस्ट, यू कैन यूज टपल. सो अगर मैं इसके ऊपर लिस्ट कवर कर दूं, लिस्ट, एंड यू कैन यूज अदर डाटा स्ट्रक्चर टू. देखिए, so now I'm getting the number 0 to, by default 0 value, 0 to just one less than number of one, less than number given here. This is not, this is the exclusive number. ये exclusive रहता है हमेशा. Okay, and if I give the structure, ये कैसे work करता है? Range, please remember this one. Range, start point are 0 by default, and necessary thing, and step 1. So these are default. If I give just 20, मैंने just दिया था 20, तो हुआ क्या था? This 20 go to the end, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गई थी. कैसे? 0 to 20 टेक 1 स्टेप, ऑटोमेटिकली बन गया था. ठीक है. इफ आई गिव सेम थिंग यहाँ पे 4 to 20, इट मीन्स दैट स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम 4, गो टू द 20 लेस देन स्टेप, स्टेप से एक लेस कर लो. ठीक है. एंड से स्टेप माइनस, you can see start from 4 and 19. Now the last value, if I give here take 2 3 jump, 4 to take 3 7, and then 10, then 13, then 16, then 19. Okay, so in this way we can produce the value. कई बार बच्चे कहते हैं, sir if I give the like float value, no dear, float object cannot be integer, so it always take the integer ही देना आपको. Okay, float is not acceptable here. Float नहीं चलता यहाँ पे. Okay, चलिए. Okay, in the place of list, if I produce a tuple, so it produces a tuple. You can see the bracket. Okay, any doubt? Let me check. How we can if inside the, how we can use if inside the elif. There you can use, then that it means you are going to use the nested if and else structure. Nested if बनाना पड़ेगा आपको. ठीक है. And can we use the range in the random? Yes, you can produce the random also, but we have to use a random module. उसके लिए random module चाहिए अपने को. ठीक है. We can produce random values. Approximately higher value and range sequence max mean. How to use if inside the elif? So you can produce means go here and write another if statement, but what is the need? Actually situation देखना आपको पहले कि क्या मुझे जरूरत पड़ेगी वहां पे. So don't think कि कैसे यूज करना है. If we have any okay गिरिराज, give me example जहां पे आपको यूज करना हो. Small example, because you can use कि हाँ चलो if यहाँ पे you can use एक और if लगा सकते हो, you can use, there is no issue. But first condition is if marks greater than 70, then second condition क्या बनेगी आपकी? Then it will jump to the internal if. ठीक है. फर्स्ट कंडीशन बनेगी 70 से ग्रेटर होना if, and then what to do. तो 75 मार्क्स, कंसीडर 70 से ग्रेटर आ गया, and what to do means मार्क्स is 75, तो ऑटोमेटिकली वो 75 तो हो ही जाएगा. ठीक है. बट उसके बाद क्या करना चाहते हो आप? मीन्स मार्क्स इक्वल टू 75 डाला तो यहाँ पे आ गए. ठीक है. ग्रेड सी आ गया, तो उसके अंदर क्या करना है आपको? ठीक है. तो वी कैन प्रोड्यूस, बट आई नीड अ सिचुएशन वो वाली. तो सी प्लस ग्रेड, हाँ वो कर सकते हैं फिर, बट वो कोड आपका फिर लेंथी हो जाएगा. इससे बेस्ट है कि आप वो फिर इसमें ही करो कि इफ मार्क्स इक्वल टू 70 सी, एक और स्टेटमेंट डाल दो एल इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ऊपर आएगा वो, इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एल इफ, फिर यहीं पे आ जाएगा आपका 75 देन सी प्लस प्लस, तो यहीं पे आ जाएगा, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. ग्रेड इक्वल टू सी प्लस, बस. You can write like this. Okay. And Kapil is saying one list comprehension example. Okay.
Okay, I will give you at the end where I have created a lot of examples. ठीक है? Okay, एक बार run कर ले. Okay, let's run it. So marks is 76. You can get C plus grade. Okay, done. Sir, if I want to convert number alphabetical to numerical, if I want to if I want to convert number, yes, I get it. If I want to convert number alphabetical to numeric, okay. So very simple. देखिए अभी for loop करते हैं. Let's do the for loop, and in the for loop I will tell you. ठीक है? चलिए. Okay, so range is completed. Okay, Abhilash power. Don't worry. Within the for loop I will cover your problem. Okay. So now let's start the for loop. Okay, for loop. So why do we use loop? So I'm asking you one question. Why do we use loop? Yes. So Abhilash, Anusha, Prem, yes, tell me. Everyone, please let me know why do we use loop? Yes. To repeat the sequence of action. Some sequence of action if you want to repeat, I can use a loop. So in the Python we have two loop. First is the for loop and second is the while loop. Okay, repetitive task कुछ करना हो, yes, right, repeats it. So let's understand the for loop. So for, what is the structure of for? So syntax में लिख रहा हूँ. So if you want to create a comment करते हैं ऐसे. Okay, if you want to create a comment, we just put the hash. So for loop, okay, write the syntax. So syntax is for, then a variable कुछ भी आ सकता है, variable. In here we use iterator, then colon, and then statement 1, and then statement 2, so on. And this is the spaces, and these are the spaces, so indentation. Okay, so this is a structure, this is the syntax of for loop. Now I'm going to use for loop with the range. For each in range, okay, what is the each? Okay, each is not a variable, sorry, each is not a keyword, it's a variable. ठीक है, each is a variable. So each की जगह आप use कर, in the place of each you can use I, J, K, कुछ भी use कर सकते हो. But that's my style. I use each. You can make your own style. You can use I, you can use J, you can use K. In is a keyword, range is an iterator, and then print statement. Okay. Rohit Khan is asking what is the iterator and iterable. देखिए, this is a very advanced topic, iterator and iterable. That will take the 3 hours of what is iterator, what is iterable, what is a generator, and what is a container. This is a complete topic. I wrote the article. You can search what is iterator, iterable, and container. Go to the Google and search. You will get my article. You will get the complete knowledge. So I wrote precisely and with the examples. Okay, Rohit. But here, if I try explain, then it will take a lot of time. So iterator means which can iterate, which can be iterate by the for loop. Simple. Right now, simple. Just for understanding. अभी बड़ा मतलब बता दिया, then you will get confused. Okay, simple, which can be iterate, means on which we can use for loop. ठीक है? Okay. चलिए. So next is mostly we use single letter mostly in the program. Single letter means like each. You can use single letter, you can use double letter, no issue. Okay. Now for loop with string. Consider I have a string Jarvis for each in str1.
str1, print each. So I'm getting the, okay, I'm getting the each character. Yes, string is iterable. Okay, अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा which one is iterable or not? In Python 3 this is very simple. If you want to know something is iterable or not, if we can use for loop or not, तो बिल्कुल simple है. Just put the dir on that object. Consider I want to know whether I can use for loop with string or not. Consider ये question है. Consider you have a question कि whether I can use for loop with string, whether I can use for loop with list or not. Okay, very simple. You can use dir function. Yesterday we saw that, and put the object. Consider object is Jarvis, and we are getting the output. If you get the iter method, are we getting any iter method here? Iter, yes, iter, magical iter. Then definitely you can use for loop with this one. ठीक है? Okay, getting sense? So कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू नो कि यार पता कैसे लगेगा कि हाउ वी कैन यूज फॉर लूप विद दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फॉर लूप विद लिस्ट, पता नहीं. सो यू कैन जस्ट dir on this that object. If you get iter, then definitely we can use for loop with that. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. फॉर लूप विद लिस्ट. For loop with list. Consider I have a list of numbers. For एक second here ना. For each in, yeah, I can use I in list 1. Print I. I'm getting all the number of a list vertically. Vertically मुझे मिल रहे हैं, but if I want to get the number horizontally, I want to know how I want to display in the horizontal fashion. कैसे? Just write here and end. Give comma, give space, whatever you want to give. Okay, I'm getting the horizontal way. So how to have element in the single line in output? आ गया ना single line. Okay, अभिजीत. So you want to place comma. चलिए comma लगा देते हैं. Let's place a comma. I'm getting one comma, तो comma आ जाएगा यहाँ पे. Okay, if you give nothing, then फिर ऐसे. Okay, so that's why it's recommended use space. Okay, now question था एक का अभिलाष, how to convert numeric value to जैसे it's a Jarvis. Okay, so if I use for loop on the Jarvis, for I in Jarvis, print I. Okay, I am getting each character. The question was that how to find its numeric value. Numeric value. So every character has a numeric value. Whatever you can see on your keyboard. Keyboard पे आपको दिख रहा है @ ampersand, percentage. Everyone has a sky value, integer value. ठीक है, so we have two things for that. मैं यहाँ बताता हूँ. So we have two functions to find the value. So one is the char. So consider if you give the char a. Oh sorry, if you give 65. Sorry, 65. Char is not defined. Sorry, it's a chr, not char. So 65 means a. 65 means a. If I want to know what's the numeric value of a, so use ord 65. So in this way you can find the numeric value of any character. Numeric value of space, अगर space की numeric value जाननी है, then it's 32. Numeric value of hash 35. Okay, so ord you can use. So यहाँ पे use कर लो आप ord I.
Now this is the numerical value of each character. So Abhilash, I hope now you are getting your answer. Okay. Okay. So I hope now getting the sense of for loop. So we can use for loop with tuple. We can use for loop with any kind of iterator. Okay. So now I'm going to write one program. Simple program, not very complex. Program find the sum of n numbers. Sum of n numbers. So हमें तो फार्मूला याद है हमेशा से n numbers का. Sum of n numbers. ये ऐसे. But let's do with the for loop. For loops के साथ कैसे करेंगे? Sum of n numbers. So consider n is n is 10. Okay. For each in range 10. So start from 0. 0 से start. Okay. अब you know very well 10 numbers का निकालना है. So whenever you use range, it take less than the number given here. So क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 से start करते हैं and go to 11. 11 means 10 हो जाएगा automatic. Okay. And take a variable here sum. That's a blank means 0 value. And sum equal to someone plus each and print. और यहीं पे print कर लेते हैं. Print. ओके सब स्क्रीन बार बार जूम आउट जूम इन. ओके एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ. एफ सम ऑफ फर्स्ट एन सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इज कितना? समवन. सॉरी ऐसे आएगा. I can see I'm getting the sum of n numbers at each point. हर पॉइंट पे मुझे पता लग रहा है. Just 1 second. It's very difficult to manage the zoom in zoom out screen. Just give me 1 second. Yeah, अब ठीक है. Okay, sum of first नहीं आया, n नहीं आएगा. Sorry, it must be each. Okay, each आएगा. Sum of first 3 numbers 6. Okay. Screen right side में अब ठीक है. I think you are getting the sense. ठीक है. Sum of first 4 number 10. Sum of first 5 number 15. Sum of first number 7. Okay. अच्छा कोड नहीं दिख रहा. Okay. Now you can see the code as well as the output. Okay, प्रेम. नहीं थोड़ा बहुत मैथ चलता है प्रेम. Okay. यहाँ पर भी मैथ. Okay, your voice. Thanks a lot. How to float? How is it for float? Float means we cannot give float value in the range. Okay, we can't see the code, please. Okay, so in this way you can find the sum of n numbers. So 10 ka 15, 9, 45, 8, 36. In this way we can find. Okay, I hope you're getting the sense. Okay, anyone, any doubt in the for loop? Okay, now I'm taking a small break from this thing. I'm going to show you the things which you can make. So this is the you can say this is the क्या है ये? This is a humidity and temperature sensor. This is the node MCU and this is the sensor DTH11. Okay, अब ये जो है मेरे पास this is a sensor and it is measuring the temperature of my room. जहाँ भी होगा temperature, this is a sensor. ठीक है? ये sensor है. ठीक है? And what's the benefit? This is IoT device, little small IoT device you can put in any room, anywhere, and you can get the output on your Wi-Fi. And I have given the IP here यहाँ पे. अब यहाँ से मुझे I'm getting the temperature is 29 मेरे कमरे का temperature. Okay, and humidity is 60. ठीक है. अब you can also get the value. You can schedule a program in Python and get this data. कैसे कर सकते हो आप? देखिए कैसे करेंगे.
यहीं पे कर देता हूँ, चलिए मैं जुपिटर पे, इट जस्ट फॉर फन, ओके, थोड़ा फन भी होना चाहिए पढ़ाई में। देखिए, import request, so this is a request module, request, okay, and URL is what, ये हमारा URL है, इसको पुट रख लीजिए उठा के यहाँ पे ऐसे, ठीक है, लोकल IP, okay, okay, local IP, and then use requests.get URL, ठीक है, एंड यहाँ लिखते हैं डेटा एंड यहाँ पे टेक्स्ट, प्रिंट डेटा, देखिए आ गया ना, रन करते रहिए बार बार, यू विल गेट द आउटपुट, ओके, इन दिस वे कैन गेट द आउटपुट, देखिए आउटपुट आ गया, यू कैन run it again, you can put in the for loop में डाल दीजिए, आप, you will get the data, हर बार means you can give some sleep time, ठीक है, yes, and out, okay, please write a program to find the first 20 prime number, देखिए prime number, first of all you know how to find the prime number का program just I can write just in 2 minutes, and first 20 prime number you have to create a for loop, ठीक है, once we get the 20 prime number then stop, ठीक है, so now I'm going to teach you how to find the prime number, then this is your exercise, how to find 20 prime numbers, ठीक है, so with the for loop you can use break statement, you can use continue statement, you can use else statement, अब देखते हैं पहला break statement, first is break statement, then we will go to the while loop, okay, break statement, okay, so I'm going to find the prime number program, how to find a prime number, so उसके लिए क्या करते हैं, so take a number n1, input int input enter the number to be checked, okay, n1 आ गया, okay, and then how to find the prime number, कैसे पता लगेगा something is prime number, consider if I say 49 is prime or not, NK educator is saying that for each in string example, each in string, ठीक है, with float value, कैसे float value कैसे, means yeah, you can use float or string, means float in string value, you are saying that, I'm not getting your sense, can you write your syntax, okay, please tell me how to find the prime number, क्या तरीका होता है find number का, consider if I say 50 is prime or not, yes, anyone can tell me how to find the prime number, क्या method है prime का, what is the method to find the prime number, लोग नहीं 2 वाला तो prime number है, 2 वाला तो if and else है, each equal to Jarvis, so each is a variable dear, we just use for each in Jarvis, हम ऐसे कर रहे थे, फिर each equal to Jarvis कैसे हुआ, अरे डोली मैम, n डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है even and odd, we are not finding even and odd, we are finding the prime number, okay, prime number होता है which cannot be divided from any number except itself or 1, okay डोली मैम, नहीं 3 student prime number means that cannot be divisible by any number except itself and 1, ये आंसर है इसका prime number, okay, it's not divided by 2, okay, that's a even and odd, okay, so how to find a prime number, so first of all take the square root of n1, so n2 equal to
square root. So how to find a square root? ये थोड़ा सा little bit tough रहेगा, but I'm telling you, in this way we can find the square root. प्रेम सोनी ने सही कहा सर, इसलिए बोला था मैथ यहाँ भी नहीं. That's right. Okay, so in this way you can find the square root. ठीक है, and int of this one and plus. So first prime number मैं बता रहा हूँ how to find a prime number. ठीक है, चलिए जल्दी करते हैं इसको. Okay, चलिए. So consider if I give 49. So print n2. So I want to use for loop. So for loop factor निकालना पड़ेगा, कहाँ तक यूज करना है. So I'm getting okay. So use for each in range 2 to n2. If n1 divisible by each, that's 0, you can print number is not prime. अगर तो divisible हो गया means any किसी भी नंबर से आप कहोगे number is not prime, and then we no need to check the next number. Consider 50. I want to check 50 and 50 is divisible by 2. 2 से divide हो गया, then no need to check 3 4 5. So that's why I use the break statement. break कर दो उसको उस टाइम. No need to go further. ठीक है, break कर दिया. Okay, and else print number is not prime. चलिए हो गया. अब consider if I give 33, number is not prime. ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ. This is not it. मैंने पहले कहा था this going to be tough, this prime number program. If I give 61, number is not 61. I think divisible by something or not. Okay, number is prime. Sorry, यहाँ पे लिखना number is prime. 61 prime. So in this way we can find the prime number program. Okay. Do this thing multiple is that completed. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. What is a break statement? Tell me what is the meaning of break statement. कोई बताएगा what is the meaning of break statement here? Yes. And क्या educator फिर sir 1 equal to Jarvis for each instance. No, I'm not getting the sense कि कैसे मतलब क्या means I'm not getting the sense. Prime number instead of we can give float or decimal. I'm not getting your question, and educator seriously. Yes, any doubt? What is the meaning of break statement? कोई बताएगा what is the meaning of break statement here? Yeah, to stop the for loop. Okay. अब देखिए consider I want to know 60 is a prime number or not. 60 is divisible by 2. तो यहीं से final हो गया कि 60 number is not a prime because it is divisible by 2. So no need to go further. No need to divide 4, 5, 6, 7 because it is divided by 2. So no need to go further. That's a break statement. Now else is coming with for loop. Now else is not coming with if. ये if के साथ नहीं है भाई, सीधी सी बात है. This is not coming with if. You can see the indentation of else matching with the for. So now this else statement with the for loop. This else with for loop. This is a little bit advanced concept. What's the meaning of that? Here else means no break statement. अगर कोई भी break statement नहीं है, if there is no execution of break statement, then the interpreter run the else statement. Please remember, if there is no execution of break statement, then the interpreter runs the else statement. अगर कोई execution नहीं है, consider मैं कहता हूँ 7. 7 divisible by 2, no. 7 divisible by 3, no. 7 divisible by 4, no. नहीं है. Then run the break statement, run the else statement if there is no execution of break statement. Okay, simple. चलिए अब क्या है इसमें? राहुल, it means that जो भी हम डबल कोमा में लिखेंगे वही प्रिंट होगा. डबल कोमा कहाँ है?
नहीं, वी हैव टू प्रिंट स्टेटमेंट विद दैट। राहुल हमें प्रिंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन द N2। N2 क्या है? देखिए, N2 इज अ लूप फैक्टर। कहां तक लूप चलानी है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, कंसीडर आई वांट टू नो कि 121 इज अ प्राइम और नोड। कैसे फाइंड करोगे 121 इज अ प्राइम और नोड? प्लीज लेट मी नो, स्वरूपनाथ। It can be even simple by dividing no number with itself. If it has more than two divisor, then it is no dear. It Sai Divya, it will take a lot of time. हमें optimization भी देखनी है, ठीक है। 3 फैक्टर निकालने के लिए we have to use loop। कहाँ तक करेंगे loop? फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, ठीक है। मीन्स यू आर सेइंग दैट इफ आई वांट टू चेक 121, आई शुड स्टार्ट 1 to 121, इट डिवाइड बाय 1 121। अगर बीच में कहीं भी आया देन वी कैन से कि इट्स अ नोट प्राइम। तो वाई शुड आई यूज 1 to 21 जबकि मैं इसका स्क्वायर रूट लेके, व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन? 11। जब 11 तक चेक करना है मेरे को, 2 to 11 तक चेक करो। इफ डिविजिबल बाय इसके अंदर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नो नीड टू गो फर्दर, दैट्स ऑप्टिमाइजेशन। सो आई रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम ओ। मैं थोड़ा सा आपको लगेगा क्या करा रहे हैं सर, ऐसे। ये बात की एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वी विल टीच इन द एडवांस पाइथन, ओके। नो नीड टू गो एट द एंड। ओके, सो आई होप यू नॉट गेटिंग द सेंस। नहीं, वी नीड टू ट्राई टिल द हाफ नंबर से भी क्यों डियर? सागर से हाफ नंबर से भी हाफ कर सकते हैं। वी कैन गो अप टू जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। इतना भी मत जाओ, ऑप्टिमाइज करो। वी नीड टू राइट ऑप्टिमाइज कोड। डेवलपर का क्या होता है कि वी हैव टू राइट द ऑप्टिमाइज कोड। सिंपल कोड तो कोई भी लिखता है, डेवलपर ऑलवेज राइट द ऑप्टिमाइज कोड एंड दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस, ओके। So this is a prime number program. So now I cover the break statement and else statement. Now else is coming with the for loop, ठीक है। देखिए, अब आप खुद देखिए, आप कह रहे हो हाफ तक जाएंगे। अब 121 का हाफ कितना हुआ? अराउंड 56, नहीं, इट्स 60, इट्स अराउंड दी 60 तक होगा हाफ। और मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर रूट ले लो 11, तो 11 तक ज्यादा इजी है कि 60 तक? ठीक है ना, तो 11 इज मोर ऑप्टिमाइज्ड देन द 60। ओके, सो यू हैव टू राइट द ऑप्टिमाइज कोड। ऑप्टिमाइज डेवलपर का पर्सपेक्टिव है, ऑलवेज राइट द ऑप्टिमाइज कोड, ठीक है। चलिए, okay, so now you know the break statement, now is the else statement, now it's time for continue statement. Consider I have a list continue statement, so I'm going to tell you about the continue statement. Continue statement we use to skip the particular iteration. Consider I'm using the list 10 0 4 5 6 0 for each in list 1. Okay, यहाँ पे नंबर है, consider I'm using the any number bw equal to 70. Okay, I want to divide this number bw, consider c1 equal to bw divide by each and print the c1. Okay, I'm getting the error. इसको मैं थोड़ा सा कोड के ऊपर कर देता हूँ। I'm getting the error. Please check why I'm getting the error. Okay, tell me, are you getting the sense why are we getting the error? ये हर नंबर ईच में आ रहा है, 10 0 4 5 6 0 4 5 एंड 70 डिविजिबल बाय 10, आंसर आ गया। 70 डिविजिबल बाय 0, yes, this is the right statement, wrong। 70 डिवाइड बाय 0। आप कहोगे मैथ बीच में लेके आ रहे हैं। yes, tell me, can we divide 70 by 0? yes, tell me in the chat box। c1 is not divided, yeah, we cannot divide 70
by 0. Okay, so in this case हम क्या कर सकते हैं, इस केस को हम कैसे रोक सकते हैं? इन दिस केस वी कैन से कि भाई अगर तो इफ ईच इक्वल टू 0 आ जाए कहीं भी एनीवेयर, तो उस टाइम आप उस टाइम एंड दैट टाइम डोंट डू एनीथिंग। इसका मीनिंग क्या है देखिए, लेट्स रन इट, आई एम गेटिंग द आंसर। इसमें क्या है देखिए, अगर तो कहीं भी 0 मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग 0 इट मीन्स कंटिन्यू, एग्जीक्यूट द कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप, इसको स्किप कर दो फॉर दिस आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। फॉर लूप कहता है अगली के साथ कंटिन्यू कर लो, अब छोड़ दो। अगर तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, इट मींस दैट डोंट गो फर्दर, चेंज कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो 4 चलेगा, 5 चलेगा, एंड देन फिर अगेन इट गेटिंग द 0, 0 में फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू मींस डोंट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ऐसे चलता है कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यू। Sir, can you provide the Python exercise Python program list after this session? Okay, so I hope you get the sense of continue statement for loop. Now it's time to create a small program. एक मैं list comprehension बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक प्रोग्राम करते हैं। Just give me 1 second, इसको जरा मैं zoom in zoom out कर लेते हैं। ये मेरी फोटो आ रही है इधर बार बार। Okay, it's very difficult sometimes to write in this one. हाँ ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। ओके, सो कंसीडर, नहीं फोटो के ऊपर आ रहा ना ये थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है, now it's perfectly fine. Okay, so consider I have a list of numbers, कुछ मेरे पास नंबर है 2 3 5 6। ओके, किसी ने मुझे कहा था कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एग्जांपल्स, so somebody told me that the list examples, list comprehension. Okay, I am giving the list comprehension examples. So consider this a list and I want to find the square of each number. Square निकालना है अपने को, so कैसे निकालेंगे square? For each in list 1 and I want to create a new list, list 2. Okay, list 1 में number है and I want to create a list 2 which contain the square of each number, square of each number. So हर number निकाला and list 2 में क्या किया, pen, मैं करता हूँ यहाँ पे लेता हूँ C1 equal to each power 2 append C1, ठीक है। चलो मैं इसमें लिख देता हूँ print list 2. Okay, I am getting a new list which contains square of each number, ठीक है। Okay, so I hope you get it. So इसको one line में कैसे करें? So how to create a one line code? Okay, one line में, so this is a list 1, इसको list 1 लिखा, and in the one line we can use for same for each in list 1 and write whatever you want at the end, each multiply each की power 2 and print this one. This is a little bit advanced thing. Okay, ठीक है जी। One line code, this I have completed this thing in one line. So this is a list comprehension. इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। Consider you can say sir please find the square of only the even number, जो even number है उनका square निकालिए बस। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है जी, if each divisible by 2 0 आता है तो ही हम नंबर निकालेंगे।
only the even numbers का, even numbers, and you can see इसमें थोड़ा सा length बढ़ गई. So you can add here if each divisible by 2 equal to 0. यहाँ पे भी आ गया one line code. This called the one line code. Okay, little bit advanced thing. Somebody asked me to give the example of list comprehension. ठीक है, if you see my code ना, मेरे कोड में आपको list comprehension ही मिलने वाला है. Okay, I will tell you my GitHub account. ठीक है, you can see a lot of project there. Okay, चलिए. Okay, now it's time for the while loop. While loop. While loop. Okay, so I hope you have enjoyed the for loop. Yes, tell me. So before jumping the while loop, I'm going to ask one question. So what is this? कभी किसी ने देखा है this ऐसा कोई device? इसमें आप memory card है and this one. Have you ever seen this thing? It contains the RJ45 and the USB and this one some USB mini USB. Okay, and this one is a little bit, memory card. Yes. Do you know what is this? Yes, tell me. Abhijit, you are right. This is a Raspberry Pi. Actually, it contains 2 GB RAM. A small computer I can join with the small screen and with the external keyboard. Okay, you can see external keyboard. Okay, I can join with this one and I can do the programming. I have uploaded a MySQL server on this one. MySQL server is एक छोटा सा and one and Django framework. So I have launched one website on this one. Okay. So if you want to do programming, you can use this one. ठीक है. No, it's not a USB hub, dear. इतना नहीं है. USB hub कौन use करता है? It's not a USB hub. This is the Raspberry Pi, this small computer. ठीक है, अगर मेरे से अगर I can open it, ये देखिए, देख लीजिए, चिपसेट है पूरा. It's chip. ठीक है, पूरे चिप है. I can remove it. सिर्फ चिप ही आती है ये. ये से motherboard. Okay, it's a motherboard. It's not USB. It's a motherboard. Okay, small hard disk and all the ports. Okay, so I hope so. I use this one daily. Not daily. Whenever I want to run any project, मैं इसको use कर सकता हूँ. ठीक है. Raspberry Pi. This is a Raspberry Pi. ठीक है. चलिए next thing. If you want to know temperature, it's right now 29 degree temperature. थोड़ा सा बढ़ गया temperature पहले से. Okay. Okay. So next is while loop. देखिए ये चीज़ इतनी अच्छी है. कंसिडर अगर आपको कोई वेबसाइट लगातार वॉच करनी है, कंसिडर यू वांट टू वॉच द ट्रेडिंग वेबसाइट कंटिन्यूसली आप वॉच करना चाहते हैं, यू कैन नॉट ओपन योर लैपटॉप एवरी टाइम. मतलब लैपटॉप को ओपन करना है और जस्ट टैब ओपन करना, दैट्स अ प्रॉब्लम कि आप कुछ इनपुट देना चाहते हो बाय यूजिंग योर कीबोर्ड. तो बेस्ट सोल्यूशन इज यूज दिस वन. इट कैन रन अ वेबसाइट कंटिन्यूसली. ठीक है, आपको देख रहे हो वेबसाइट पे एंड you can it has a internet facility, means it has a Wi-Fi, Bluetooth and RJ45 jack. You can plug with this and you can run your website and you can watch the any website. You can also watch the YouTube. इतना powerful है. 2 GB RAM, you can also watch the YouTube. Okay, चलिए. Okay, next is while loop. So while loop कैसे रन करते हैं? While loop, how to use a while loop. Let me change the color. While in the lowercase. Prem Soni, acha sir, where are from? I'm from actually Haryana and Punjab, mixed mode. Okay. So while here you can say condition, true or false. If condition is true, then it, and here colon, then it's execute the statement coming under this one. Okay, statement 1, statement 2. So while and condition.
state, and here condition if true, then run the statement, and then after execution of statement 1, statement 2, so on, then it will again check the condition is still true. अगर फिर true है फिर से execute करो. If condition is false, then come outside the loop, break the loop है, execute. ठीक है, चलिए. ये अब बच्चे पूछ रहे हैं सर cost you can check on the Amazon, latest cost check कर लो. It's totally depends on the RAM size. So 4 GB RAM, 8 GB RAM and 2 GB RAM. Okay, मेरा 2 GB RAM का है. And Amazon से you can purchase, and it has a different operating system. Linux चलेगा operating system, if you know the Linux. Okay, Linux चलता है इसके ऊपर. So no Windows, only Linux. Okay, ठीक है. So while loop. So let's see while loop. So in the if statement we created the password structure कि password कैसे fill करें. Okay, ठीक है, password. So what's the problem with that thing? कोई बता सकता है उसमें क्या प्रॉब्लम थी? Let me check that program. If था, if somewhere if structure, I forget where I wrote that if and else. हाँ, ये आपने सबने देखा था, this code. Can you tell me what is the problem with this code? इसके साथ क्या इशू है? Yes, anybody? What's the issue with this one? Abhilash is saying, sir, what should I do if I want to convert 20 equal to 20? Okay, dear, इसमें conversion का कुछ नहीं है, ठीक है. Maybe the string वाला module help करे. Otherwise, you can write 1 का 1. You can use dictionary for that. आप dictionary use कर लो, ठीक है. तो उसके अंदर conversion होता है, ये सब कुछ कर सकते हो. Means like this. मैं बताया तो just dictionary मैंने बताया था. D1 you can create a dictionary like 1 for 1. You can write 2 for 2. Okay, 3 for 3. और शायद you can explore the string module. Okay, mostly in programming में हम इतना use करते नहीं है. Like I want to know 1, I want to know 3, ऐसे, ठीक है. हाँ, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, इट आस्क ओनली वन टाइम, ये एक ही बार पूछता है, ठीक है. रिपीटेड एक्शन ये, सो इट कैन आस्क ओनली वन टाइम. ऐसा है कि बार बार पूछेगा. अगर सही है ठीक है, नहीं तो रॉन्ग प्रिंट कर देगा. तो इट शुड आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ऐसे पूछता रहे. तो इन दैट केस वी यूज द व्हाइल लूप. कैसे करेंगे व्हाइल? कंसीडर पास लिख दिया, पासवर्ड ले लिया हमने. इनपुट एंटर द पासवर्ड, ठीक है. एंटर द पासवर्ड एंटर किया, एंड देन इफ, अच्छा नहीं, व्हाइल, सॉरी, व्हाइल इफ पासवर्ड इज रॉन्ग. अब अगर रॉन्ग है तो आई वांट टू क्रिएट ट्रैप फॉर द यूजर. अगर उसने रॉन्ग पासवर्ड डाला तो उसको एक ट्रैप में घुमाओ, साइकिल में घुमाओ बार बार, ठीक है. कंडीशन क्या रहेगी? इफ पासवर्ड इज रॉन्ग, दैट्स अ ट्रू कंडीशन. pass1 नॉट इक्वल टू, पासवर्ड है लाइक लेट्स, इधर पासवर्ड नॉट इक्वल टू. अगर पासवर्ड गलत है तब क्या करना है? देन से कि हाँ योर पासवर्ड इज रॉन्ग, प्रिंट द स्टेटमेंट रॉन्ग पासवर्ड एंड आस्क द पासवर्ड अगेन. सो मैं इसको स्टेटमेंट को फिर से अंदर रिपीट कर देता हूँ. सो आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट, एंटर द पासवर्ड, एंड यहाँ पे लिखते हैं अगेन. जब तक सही पासवर्ड नहीं डालेगा, लूप विल नॉट अलाउ द यूजर टू गो आउटसाइड, ठीक है. एंड आफ्टर दिस वन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 2 आइडेंटिफिकेशन, ये जो 2 आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लिखे हैं, इसके कंप्लीशन के बाद अगर तो राइट है, वेलकम टू लेट्स अपग्रेड. Okay, let's, so you can see here colon, these 2 statement coming under the if, sorry, while loop. Enter the password है कैसे del,
Enter the password again. It's asking password is Intel. Enter the password again. Wrong password, wrong password. Let's. Welcome to Let's. Is the while is infinite loop. There are two type of loop, infinite and definite, definite or indefinite. So where we need the indefinite condition कि पता नहीं program कब end हो, in where the program will end, हमें नहीं पता कहाँ program होगा, ठीक है. In that case you can use while loop. अब range के case में whenever we use in the range 20, define it means it define maximum number 20, maximum 20 time it can run. Jarvis जब हमने लिया था Jarvis, maximum it with for loop, maximum it run with 1 2 3 4 6 time, because six character 6 time. So we know the maximum range, maximum value, but here we cannot predict कि कब तक प्रोग्राम खत्म होगा. हो सकता है कि 100 टाइम वो रॉन्ग पासवर्ड डाले. So this is indefinite loop. Maybe the पहली बार में ही पासवर्ड सही हो जाए, वो लूप के अंदर आई नहीं. Let's run it again. Consider फर्स्ट टाइम में डाल दिया तो लूप के अंदर एंटर ही नहीं किया. We never enter in the while loop. Okay, so it's totally unpredictable here. So whenever situation become unpredictable, we use the while loop. ठीक है जी. Yes. While true का मीनिंग होगा come inside the loop. लूप के अंदर आओ. If condition is true, अब एक condition, if condition is true, this true, कलर चेंज करते हैं. If condition is condition is true, और वो true कब होगी? If condition is true and the true कब true होगी? When it will be true if password is wrong. If password is wrong, then condition is true. एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर. ओके रोहित खान. यस. Okay, now you can use break, continue and else. These statements, so break और continue only for the loop. Loop के लिए ही बनी है सिर्फ. You can use with for loop, you can use with while loop. तो ये जो दो स्टेटमेंट है आपकी, you can use only with the loop. Only break का मतलब ये iteration break करना. So means if there is a loop, then you can break the iteration. So continue and break only for the loop. Else can be used with if, it can be used with for loop, it can be used with while loop. एक complementary supplementary part बनता है उसका. Else, so else हमेशा if के साथ आएगा या for या while. और भी 2-3 कंडीशन है, I will tell you later. मिस जब प्रोग्राम में आप आओगे कहाँ कहाँ पे else यूज कर सकते हो. So else हमने if के साथ देखा, f we saw with for loop, you can use else with while loop. Yes. Any doubt here? So is there anything to break if statement? Dear, if कैसे break होगा? If तो सिंगल स्टेटमेंट है. break उसे करते हैं, break iteration को break करते हैं. if तो जस्ट सिंगल स्टेटमेंट है, उसे क्या ब्रेक करेंगे अभिजीत? ब्रेक if हम ब्रेक उसे करते हैं जहां आइट्रेशन होता है कि 20 टाइम आइट्रेट. तो if तो एक ही स्टेटमेंट है ना डियर, उसे क्या ब्रेक करना? ओके, तो if वाला ब्रेक होती है हमेशा लूप. ओके, सो आई होप यू गेटिंग द सेंस. So हमने किया, we saw continue, we saw break. Yes, any doubt in your mind, please let me know. And after that we will see the function, modular programming in Python. ये कैसे लिख सकते हैं हम modular programming? मतलब means प्रेम सोनी, what is the meaning of मतलब? Abhijit is saying sir like to break if statement block. अच्छा, अगर आपको if statement का नहीं if statement तो complete execute होगा. देखिए कैसे, मान लीजिए if you are saying, आपने लिखा if statement, ठीक है, कोई कंडीशन लिख दी.
एंड इसके अंदर आपने लिखा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ठीक है। और आप कहते हो स्टेटमेंट 2 के बाद ब्रेक करना है, ठीक है। ओके, कंसिडर आप क्या स्टेटमेंट 2 के बाद ब्रेक करना है, तो यहाँ पे आप ब्रेक मत कीजिए, यू कैन यूज अनदर इफ, एक और इफ लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट 2 और 3 में कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन आल्सो यूज नेस्टेड इफ एंड एल्स, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। कि स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट, अगर तो कंडीशन ट्रू है देन कम, एंड अगर अगेन some condition is true then run the statement 3. so means ये कंडीशन और ये कंडीशन must be valid for statement 3, तो आप ऐसे कर सकते हो, you can do like this, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको इससे, फिर इसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा अपने को, and write the next if statement in same indentation if something and statement 3 like this, nested if लगाना पड़ेगा आपको, ओके प्रेम। चलिए, so next is function, how to write a function. so what is the meaning of function? हमने काफी कुछ कर लिया, so what's the meaning of function? Please let me know what's the meaning of function. Yes, what is the meaning of function? Anyone can explain? function हमने अपने C में बनाया होगा, so give that definition. function, we use function for two things, वैसे और भी हो सकता है, but as per my knowledge we use function for two things. First, we create a functions, so हमने देखे built in functions, so far we saw built in function, जैसे int देखा हमने, range देखा, dir देखा, so we saw some built in function, group of statement, ठीक है, we store some task and if we want task again and again, ठीक है, statement carry out the task. Okay, so first thing, to organize the code. Second, to repeat some set of statement. If I want to repeat some set of statement again and again with different argument, I can use a function. ठीक है ना, आपने सही लिखा है, if I want to task again I want to create some task again and again, then I can use the function, ठीक है। अब देखिए, so how to write a function in Python. So def लिखिए, def statement and then any name like fun1. Okay, so I'm writing the definition and print statement, जैसे मैंने लिखा print statement and like hello world, ठीक है, लिख दिया। So this is a definition, very simple program, very simple, just एक print statement और कुछ नहीं, and if I run it, इसको रन करेंगे, I am not getting anything, देखिए रन तो कर लिया पर कुछ नहीं मिल रहा, ठीक, क्यों? We have to call it, इसे कॉल करना पड़ेगा, now I'm getting the output. So this entire is the definition, and this is the calling. Okay, चलिए, you can give the function with argument कैसे देने हैं आपको, देखिए function, whenever you create a function, make a generalized function. generalize का मीनिंग क्या होता है, so that your friend, your colleague can use that function. कंसिडर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
एग्जाम्पल है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा था बहुत पहले, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, शेल के डॉट समथिंग समथिंग डॉट पी वाई। ये मेरा प्रोग्राम है फाइंडर टू सर्च एनी फाइल। यस्टरडे मैंने आपको बताया था कोई फाइल सर्च करनी तो ये करता है। सो इस पाइथन 2 में लिखा था उस टाइम, बट सो यू कैन सी दिस फंक्शन टू रीड द एक्सेल फाइल। ये एक बार बना दिया मैंने, कोई भी एक्सेल फाइल रीड करेगा एंड इट रिटर्न द डेटा। जस्ट गिव द डिफरेंट फाइल नेम दो विद पाथ एंड इट विल रिटर्न द डेटा। सो दिस इज जनरलाइज फंक्शन, एनीबडी कैन यूज दिस वन, कोई भी इसको यूज कर सकता है। जस्ट फाइल नेम दो और डाटा ले लो, एक्सेल फाइल, कोई भी एक्सेल फाइल दो उसका डाटा मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। सो फंक्शन शुड बी जनरलाइज व्हेनेवर वी राइट अ फंक्शन इन कंपनी इन प्रोजेक्ट, सो ऑलवेज ट्राई टू राइट द जनरलाइज फंक्शन। कुछ फंक्शन को जनरलाइज करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन लाइक टू क्रिएट द डेटाबेस कनेक्शन, उसको भी आपको जनरलाइज करना पड़ता है, ठीक है। Okay, so now I'm taking the exam question. Question is statement, okay, set of state instruction if we want to execute, ठीक है सर। मीडिया पाइप लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करें प्लीज आस्क मी। ओके, ये भी मैं इस पे भी आऊंगा। मीडिया पाइप, संतोष एक बार मैं फंक्शन बता दूं। वंस आई टेल यू द फंक्शन आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी और मॉड्यूल। ओके, चलिए अब अगली करते हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट। नेक्स्ट फंक्शन विद आर्गुमेंट। Consider I want to create a function which can produce the sum of two numbers. So two numbers ले लिए यहाँ पे, c equal to a plus b and x equal to 10 and y equal to 20, fun1 equal to x and y. Okay. I'm getting 30. So this is function with argument. अब देखिए ध्यान से सुनना बात को, ये है हमारे पैरामीटर्स, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ठीक है, एंड ये हमारे आर्गुमेंट्स। सम बुक्स और कभी लेक्चर्स में आप देखोगे तो वो इसको भी आर्गुमेंट बोल देते हैं, बट द रियलिटी दीज आर द पैरामीटर एंड दीज आर द आर्गुमेंट, ठीक है। स्पेसिफिकली बोले दीज आर द आर्गुमेंट, दीज आर द पैरामीटर। अब पाइथन में क्या होता है, पाइथन ऑलवेज यूज द रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉल बाय रेफरेंस? कोई बताएगा कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू? यस, एनीबॉडी? Call by reference and call by value. Yes, anyone? Call by reference and call by value. Yes, I can see the last comment is done by the Rahul Bhardwaj. Call by reference and call by value. Actually, call by reference का internal meaning बताया था मैं आपको. Just a pictorial diagram बना रहा हूँ, okay? Okay, call by value argument copy past. हाँ, yes, copy past. And call by reference means actual address pass, memory location. Yes, right. Naresh Kapoor and Abhijit, you are very good answer. Completely 100% right answer. Okay. Here x10, consider x10 यहाँ पे and x is referring to this value, and 20 here y referring to. ठीक है जी. Okay. And this has a memory location like 124, and this is a memory location of x, and this is memory location of 20, just for understanding. Okay. And whenever we say x and y, तो ऐसे होता है internally a x and b y. So means it's passing the address. तो वो कैसे बनेगा, देखिए a now pointing to same data and b pointing to same data. So this is the call by reference. अगर ये होता call by value, तब क्या होता? तो आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर, इसको मैं कर देता हूँ और रेड से। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में होता कि ये 10 यहाँ क्रिएट होके ए इसको रेफर करता, फिर मींस दिस 10 बोथ आर डिफरेंट, कॉपी बन गई उसकी एक नई, एंड दिस इज द कॉल बाय वैल्यू। पिक्टोरियल डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। वैसे इससे याद रहता है ना कि हाउ टू
show demonstrate the call by value and call by reference. Okay, yes, I hope you're getting the sense. So Python use a call by reference. It saves the memory actually. Okay, call by reference. और हमेशा एक चीज याद रखना, integer, float, string, tuple. These are the immutable objects. ये हैं आपके immutable object. In the memory 10, whatever the location of 10, you cannot change it. You cannot change 11, you cannot make 11 of this. आप इसका 11 नहीं कर सकते. You cannot make 11 of this. एक बार 10 store हो गया तो that's 10. You cannot do 11. ये इसमें possible. In the C it's possible, Java is possible, but in the Python it's not possible to change the integer, float, string and tuple because they are the immutable objects. तो यहाँ पे 11 नहीं कर सकते आप because the method is not available. हाँ, अगर आप कहो कि चलो x equal to 11 कर दो तो 11 यहाँ store होगा and x will pointing to now start pointing to 11. 10 वहीं रहेगा अपनी जगह. ठीक है, so this can be a good interview question और समझना पड़ता है कि how Python works. Internal structure always necessary to learn in order to become a developer. Okay, good developer तो हर कोई बन जाता है, but good developer you know need to understand the memory, कैसे memory store हो रही है, so that you can optimize the data, you can write the optimized code. Okay, चलिए. Now it's time to return this statement. Consider you want to produce a return statement. Oh, is this zoom out zoom in problem फिर से start हो गया. Okay, so any doubt in this one? So I'm just removing. तो मैं नया ही ले लेता हूँ यहाँ से. Okay. Copy pasting this code and new one. Okay. So return. If I want to return value, consider मुझे C value चाहिए. Consider I need this C value. ये C मुझे outside चाहिए. मुझे कुछ calculation करनी है. I need this C value, so I can return statement. Return C. And वो यहाँ पे the function one क्या हो गया? Whatever it is returning, that is the output of this function. इसकी output बनेगी वो. अगर आप इसको store करना चाहते हो any variable like k, print k. फंक्शन बनाया, उसका आउटपुट क्या निकला, दैट इज द k 30. सो अगर आपने बाय मिस्टेक a ही लिख दिया बाय मिस्टेक, सो वी आर गेटिंग 10 हियर. तो 10 उसका आउटपुट हो गया. इस पूरे फंक्शन का रिजल्ट क्या है? सो दैट्स अ रिटर्न वैल्यू. c is a global variable. No dear, c is a local variable. c is not a global variable. लोकल है ये. ठीक है जी यार. क्वेश्चन से ओनली डिक्शनरी नहीं डिक्शनरी नहीं है. लिस्ट इज आल्सो म्यूटेबल, डिक्शनरी इज आल्सो म्यूटेबल, सेट्स आर आल्सो म्यूटेबल. सो काफी सारे डाटा स्ट्रक्चर व्हिच आर म्यूटेबल. वी नीड टू लर्न व्हिच आर नॉट म्यूटेबल, व्हिच आर इम्यूटेबल. वो लर्न करना आपको. ठीक है, मेन थिंग वो है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन रिटर्न इट. ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट तो उसमें आएगा क्लास में, एंड स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट चलता है उसके अंदर जावा में. ओके, इसमें चलता है ग्लोबल वेरिएबल ओनली, ग्लोबल वेरिएबल एंड क्लास मेंबर्स. ओके, इसमें स्टैटिक नाम का कुछ नहीं होता, ग्लोबल वेरिएबल होता है. ओके कृष्ण, ओके कपिल, स्टैटिक वेरिएबल नाम का कुछ नहीं होता इसके अंदर. स्टैटिक इस ग्लोबल वेरिएबल होता है. एंड इफ वी डिक्लेयर सी बिफोर द फंक्शन लाइक C10 देन इट रिटर्न C. हाँ, वो कर देते हैं. अगर आप कंसीडर, लेट मी क्रिएट अ C हेयर. अब आपने C लिख दिया यहाँ पे, C इक्वल टू 100. ठीक है, इसको मैं लेता हूँ C1 एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट C1 एंड प्रिंट C और रिटर्न कर देते हैं C1.
now I'm getting sorry, it's C and C1 C, so I'm getting 100. So this C is a global variable, तो मैं इसको बोलता हूँ it's a global variable. Global, and global can be used here. ये वाला sorry, इसको हटाओ जरा, ये ग्लोबल है यहाँ पे, ठीक, ग्लोबल वेरिएबल हो गया. अगर आपने यहाँ इंसर्ट बिफोर डूइंग कुछ समथिंग, अच्छा मैं इसको रिमूव करता हूँ. चलो लेट्स डिस्कस ऑन द ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस कंफ्यूजिंग टॉपिक. मैं इसको ये क्लियर करता हूँ, ठीक है. इस केस में कंसीडर आई एम जस्ट प्रिंटिंग दी सी, मैंने प्रिंट सी किया, ठीक है. आई एम गेटिंग 100. देखिए यहाँ पे इफ देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट, अगर कोई रिटर्न, इफ देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट देन इट रिटर्न द नन. Always remember this can be interview question. If there is no return statement in the function then it returns the none. ठीक है, none आ गया यहाँ पे. But जो C है global variable that's a 100. अगर आपने C को अंदर डिफाइन कर लिया C 105 then print 105, तो कहने का मीनिंग क्या है? What's the meaning of this one? Print C, चेक करेगा do we have C, कहेगा हाँ है भाई, तो उसको प्रिंट कर दे. तो लोकल में है तो लोकल वाले को प्रिंट कर दे, सिंपल. कंसिडर इफ वी डोंट हैव सी, अगर मेरे पास सी नहीं है, आई एम मेकिंग अ कमेंट इन दैट सिचुएशन, सी है नहीं है बिकॉज कमेंट है ये नहीं बना, तो लोकल में है, ग्लोबल में है सी. हाँ जी, यस ग्लोबल, यस. इज देयर एनी ग्लोबल सी इन ग्लोबल स्कोप? यस, ग्लोबल स्कोप में है, तो उसको निकाल के लाओ. सो दैट्स 100. सो वी हैव हियर लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप. तो मैं एरिया बना देता हूँ. So yellow area is a local scope. Yellow area is a local scope, and outside the yellow area that's a, हाँ एक और, sorry एक और, these are also the local. ये भी local है, okay, ये भी local है, okay. ठीक है. अगर now please let me know, अब मैं कुछ आपसे पूछने वाला हूँ. Now I'm going to ask one question. Any doubt so far? ये प्रिंट बिकॉज इट्स नीड सी. अगर सी लोकल में है देन टेक इन द लोकल, अगर लोकल में नहीं है देन कम टेक फ्रॉम द ग्लोबल. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन. कंसीडर इफ आई राइट ये स्टेटमेंट सी इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए. नाउ टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. Just tell me the answer in the chat box. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? Yes. Tell me the chat box. A की वैल्यू है 10. Yes. Yes. Anyone? So mostly people are saying 110. No. मैं कह रहा हूँ ये एक एरर है. This is error. Oh my God, ये तो सीरियस एरर है. 2 बार एरर आ गया. क्या एरर देख लीजिए कहाँ पे. एरर है लाइन नंबर 3 पे, एंड एरर इज, यार इस जिस चीज से बचते हैं ना वही चीज होती है. जूम इन प्रॉब्लम. एरर इज लोकल वेरिएबल सी रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट. ओ माय गॉड, लोकल वेरिएबल सी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट. ये कह रहा है कि भाई आप लोकल की तरह यूज करो या तो ग्लोबल. एक चीज देख लो, आप लोकल भी कर रहे हो ग्लोबल भी एक साथ नहीं यूज कर सकते आप. इसका मीनिंग ये है. क्यों, कैसे? अगर तो आप जस्ट लिख रहे हो c इक्वल टू 100 तब तो ठीक है, दैट्स ओके.
बट यू आर राइटिंग C इक्वल टू C प्लस A। वो कह रहे हैं कि ये तो अगर इनसाइड इफ यू आर यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है कि लोकल है। ये तो बता रहा है कि C इक्वल टू समथिंग ऐसा लोकल, ये हो गया लोकल। कह रहा फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये तो लोकल, C लोकल है और ये C क्या है, ये ग्लोबल। ऐसा नहीं चलेगा, या तो ग्लोबल करो या लोकल करो। ये यहाँ पे लोकल हो गया, बट यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हो K इक्वल टू C प्लस A, फिर ये बनेगा आपका ग्लोबल। लेकिन अगर आपने कर दिया ये दोनों स्टेटमेंट को मिक्स कर दिया, इस दोनों को मैं फिर से बताता हूँ आपको। अगर आप लिखते हो ऐसे जस्ट, ये तो हो गया लोकल। अगर आप लिखते हो C इक्वल टू K प्लस 100, देन दिस इज अ ग्लोबल। ओके, डिफरेंट वन स्टेटमेंट टू। इफ यू आर मिक्स बोथ द स्टेटमेंट कि C इक्वल टू C प्लस 100, भाई फिर कौन सी चलेगी, लोकल वाली ग्लोबल वाली? तो ये एरर है। ओके, नाउ आई होप यू गेट द सेंस कि कैसे चलेगा। ठीक है, यस। एक चलाओ, या तो वो ऊपर लोकल वाला चलाओ या ग्लोबल वाला। ओके, सो आई होप नाउ गेटिंग द सेंस। ठीक है, अब आप कहते हो नहीं सर मेरे को ये चलाना ही चलाना है, ये एरर है, दिस इज द एरर। इट इज सेइंग दैट लोकल वेरिएबल, बिकॉज इंटरप्रेटर समझ रहा है कि भैया लोकल है, क्योंकि आपने इक्वल टू लिखा, डेफिनेटली दिस इज लोकल। एंड बट यहाँ पे आप ग्लोबल की तरह मान के चल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई दिस इज दी ग्लोबल, आप इसको ग्लोबल ही लेके चलो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई जो सी आप यूज कर रहे हो वो ग्लोबल है, तब आपका चल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट इन द सेंस ऑफ दिस लोकल एंड ग्लोबल फंडा। यस, एनी डाउट? अभिजीत कह रहे के एरर कमिंग बिकॉज वी आर नॉट, नहीं नहीं डियर, अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे तो नन आ जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से अगर आप कुछ नहीं रिटर्न कर रहे तो नन आ जाएगा, एरर नहीं आएगा, ये याद रखना अभिजीत। if your function is not returning anything and still you are printing, you will get the none, no error. Okay, Python is case sensitive, yes. Okay, is creating class and creating a new function is, no, class is different and function is different. Okay, function is different, class is different. Okay, हाँ, अब मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, लेट लास्ट प्रोग्राम बता देते हैं करके, सो दैट एटलीस्ट आपके फंक्शन वाले डाउट विल बी क्लियर, सारे हो जाएंगे। इसको मैं फिर से एक नया विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। Actually, that's the beauty of my computer. So this is i7 machine and 1.5 SSD M2. Okay, इतनी हार्ड डिस्क है इसके अंदर, 1.5 terabyte of SSD space and 16 GB RAM. That's why I can run multiple application simultaneously. वरना बहुत मुश्किल होता है किसी कंप्यूटर पे काम करना. Okay, and it's 11th generation machine. Okay, so next is def function 1 A and B. Just I'm taking A, okay? और C ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा आपको सेम लगेगा. और यहाँ भी आपने ले लिया C इक्वल टू 10, C इक्वल टू C प्लस 10, print C. Okay, and here x equal to 400 and function 1 equal to x. Now what would be the answer? Yes, कोई बताएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा? Tell me in the chat box. Sir, this is the Windows actually. This is a Windows machine. Yes, anyone? Python is case sensitive. हाँ जी, is creating class. Are this concept are in the oops? So this is a function concept, not the oops concept. Oops concept take a lot of time. That will take 3 or 4 hours. कोई कह रहा है कि 400 आएगा, कोई 11 सनिष्ठ ने दिया है 410. Yes, 410 is answer. 410 is answer, right answer.
sorry, it's a serious mistake. Okay, so error sorry, error मैंने बोला था, it's for 10. Okay, क्यों? अगर तो मैं ये गायब कर देता हूँ फिर तो एरर है, ठीक है, ये यहाँ पे अलग है, फिर ये एरर है, वही सेम टू सेम एरर आएगा, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल रेफरेंस, फिर तो एरर आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एंड यहाँ पे ले देता हूँ एक्स, फिर एरर नहीं आएगा डियर। क्यों? आई टोल्ड यू वन थिंग, अब ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ये एरिया सारा लोकल एरिया है, वट एवर इन द लोकल एरिया, यस ये भी लोकल ही है, ये सी भी लोकल है। कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको, हाउ इट वर्क्स। देखिए ये मेमोरी लोकेशन है, this memory location, this is the 400 C and ये X, both are pointing to this 400, this is C local, और यहाँ पे कहीं 100 है, ये C global, C global and C local both are different memories, ठीक है। इसलिए अब जो C है, what's the value of C right now, 400, तो 400 plus 10 that's a 410, इसलिए यहाँ पे 410 आएगा। ओके हाँ कृष्णन, that's why you said the error, thank you. Okay, so I hope you get the sense of this function, मैंने आपके concept clear कर दिए होंगे। Okay, I know this is very confusing, but do some self practice, you will get the answer. जो मैंने कराया, repeat the video again and again and check all the examples, so you will get the sense. Okay, so I hope you like this lecture. If you miss something, you can go see this video again and again. Video कहीं नहीं जाने वाले, video यहीं रहेगी, ठीक है। Go to the YouTube and check the Let's Upgrade and check the video again and again. So I hope now you get the sense of function. Or if you want to install any library, you can use here paypy.org, paypy.org. कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, you can use like a media वाला, बच्चा बोल रहा था, I forget that, media pipe कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा करके था। So dear ये है media pipe वाला, आप इसको उठाओ, यहाँ पे जाओ और इसको ऐसे लिख दो, बस हो गया इंस्टॉल, ठीक है जी। तो आपके आंसर ही मैंने दे दिया। इट टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। बहुत कुछ डाउनलोड हो रहा है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या डाउनलोड करेगा, सो आई डोंट वांट टू इंस्टॉल, ठीक है। इन दिस वे यू कैन इंस्टॉल द मीडिया पाइप। ओके चलिए, ओके बाय बाय। ओके हाँ, गिटहब बताया था मैं, मेरा गिटहब है, गिटहब ये मेरा गिटहब है। You can just write the Mohit Raj over here. You get this repository I have created. कोई भी repository में you can Django, YouTube के कोड, बहुत सारे कोड हैं, Finder कोड, Update कोड, you can see, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। This is my GitHub. Okay, चलिए। So bye bye everyone, bye bye. I hope you like the today's lecture. So like कीजिए, comment कीजिए अच्छे अच्छे, okay. So bye bye everyone, bye bye. Okay, let's upgrade team.